आज का टॉपिक है सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इज द मोस्ट important instrument of the state through which the latter realizes its objectives through its three organs, that is the legislative, the executive and the judiciary. इसमें हमें लिंक बताया गया है सिटीजन्स का विद गवर्नमेंट. इनका लिंक बताया गया है. बाकी ये बताया गया है कि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसकी तीन मेन जो सिस्टम्स हैं वो है द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. इट It makes laws and rules, implements them, maintains peace and order in the country, and resolves clashes of interest. It also tries to ensure territorial integrity or unity of the country. Modern democratic government perform many other functions for the development and welfare of the citizens. And the government as a whole, this is especially so in the developing country like ours. तुम्हें इसमें बताया गया है कि जो ये लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, ये क्या काम करते हैं. ये लॉ को या रूल को बनाते हैं, उनको क्रिएट करते हैं, फिर बाद में उनको हेल्प करते हैं कि वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, वो देखते हैं. और अगर कुछ चेंज करने वाला है उसमें तो उसकी तरफ भी ये फोकस करते हैं. स्क्रीन तो वो सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं कि वो अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, उसको कैसे देखा जाए, उसकी तरफ भी ये ध्यान देते हैं. आगे है मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट परफॉर्म मैनी अदर फंक्शंस फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस. द society as a whole, there is especially so is developing country like ours. The relationship between the citizens and the government is reciprocal. कहते हैं जो रिलेशनशिप जो है सिटीजन और गवर्नमेंट का, ये ऑपोजिट है बिल्कुल. जो सिटीजन्स हैं वो मेंबर आ जाते हैं स्टेट के, और जो स्टेट है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है, इसलिए ये दोनों ही अलग हैं एक दूसरे से. So far as the rights of the citizens are concerned, they are divided into three: civil, political and social. Civil rights are those rights which are necessary for the freedom, liberty of the individual. They include the right of life and personal liberty, right to freedom of speech, expression and thought, right of own property, right to enter your contacts, right to of speech, expression and thought, right of own property, right of enter into contact, right of speech, of equality law before, equal protection of law. Equality before law means absence of specially privileges. Equal protection of law implies equal should be treated equally. Political rights include the right to vote and right to contest election. Social right includes the right of some degrees of economic welfare and security, and the right to live the life of the civilized being accordingly to standard prevailing in the society. अब कहते हैं कि सिटीजन जो है मेन तीन रोल्स में आगे डिवाइड किए जाते हैं. एक है सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल. ये तीन चीजें हैं. अब सिविल में क्या होता है, सिविल राइट्स में ये होता है कि एक बंदे को कितनी फ्रीडम है कोई चीज की, एक इंडिविजुअल को कितनी फ्रीडम है उस बारे बताया जाता है कि एक किसी की कितनी लिबर्टी है, कितनी फ्रीडम है, उस बारे बताया जाता है. एंड नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल, जिसमें पॉलिटिकल राइट्स बताए जाते हैं कि गवर्नमेंट उसको क्या क्या अधिकार देते हैं. एंड सोशल राइट्स आर दैट कि जो पूरे सोसाइटी के लिए राइट्स है कि उनको फॉलो करने ही पड़ेंगे, उसमें वो चीज आ जाती है. इट इज अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. दे शुड ऑपरेट विद गवर्नमेंट एंड अबाइड बाय द लॉज एंड रूल्स, should help in preventing diseases of education, and by keeping neighborhood clean. They should have small families to help the government check the population growth. They should preserve public families to help the government check the population growth.
They should preserve public property, help in catching and punishing anti-social and anti-national elements. Further, the citizens of different caste, religion, language, and religion should solve their problems by understanding an agreement and not by violent means. In this way, a lot of resources, energy, and time of the government can be saved for consecutive war. कहते हैं कि लोग वैसे तो आपस में कर लेते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम आए तो सॉल्व वो कर लेते हैं कि हाँ क्या है, एक गवर्नमेंट सरकार के लोगों के चक्कर में पड़ना। पर अगर फिर भी कुछ ऐसा केस आ जाता है जो कि एक सोसाइटी पे बेस्ड होता है, तो गवर्नमेंट पूरी उसकी भी हेल्प करती है कि वो जो है केस वो सॉल्व हो सके। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, और वी कैन से कि आजादी। The term liberty is derived from the Latin word liber means free. Thus, liberty means freedom. Freedom is the paramount importance of the development of an individual personality. Historically speaking, the term liberty was initially defined an absence of all restraints on an individual. This is known as negative concept of liberty. Each liberalism championed negative liberty. John Stuart Mill, the 19th century English political philosopher, described restraint as an evil. Mill was especially worried about the restraints coming from the state and society. लिबर्टी क्या है? लिबर्टी का मतलब ये है, पहली बात लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, कि एक इंडिविजुअल को, एक सिटीजन को कितनी फ्रीडम है कि वो अपना कार्य, अपना काम जो है कर सके। बाकी इसमें जो जॉन स्टेट मिल है 19th सेंचुरी के, वो बोलते हैं कि ये एक आजादी, क्या क्राइम करने के लिए भी आजादी दी गई है, तो वो इस चीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं। बट ऐसा नहीं है। फ्रीडम, एक पर्टिकुलर फ्रीडम दी गई है, एक स्टेट और सोसाइटी को दी गई है, बट ये गलत कामों के लिए नहीं गिवन, ये गलत कामों के लिए नहीं है। However, since individuals like to gather in a society, complete absence of restraints would be neither possible nor desirable. Further differentiating between the self-regarding and other regarding action is not always possible. It has been very empty said that your liberty to swing your arm ends there where my nose begins. For liberty to be enjoyed by everyone, it should have reasonable restraint. This is concept of positive liberty. This concept further means freedom or to be the master of one's own selves. Harold J. Liskey spotted this concept, freedoms and opportunities from history as shown to be essential on the development of personality. The freedom often requires restraint of law of the freedom of some. Later liberals spotted the positive liberty. कहते हैं एक लिबर्टी क्या है कि एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल के लिए तो है ही है, लिबर्टी फ्रीडम है ही है, एक सोसाइटी के लिए भी है कि एक इंडिविजुअल है, वो रहता तो सोसाइटी में ही है, उसको मिलजुल के रहना पड़ेगा, सब कुछ देख दुख के, कि एक फ्रीडम प्रॉपर्ली वो फ्रीडम है। बाकी हेलो जे लिस्की, ये इन्होंने भी ये फ्रीडम वाले कॉन्सेप्ट को पक्का किया है कि हाँ ये ही है फ्रीडम, कि जिधर एक बंदा इंडिविजुअली प्रॉपर तरीके से रह सके। आगे safeguards of liberty. Declaration of rights of the individual in the Constitution is considered as an important safeguard of liberty. This way of government can be prevented from encroaching upon the freedoms of the people. Impartial judiciary is rightly called watchdog of liberty. Without it, the liberty of the individual would be meaningless. Declaration of the decentralization of powers is another important safeguard of liberty. History is witnessed in the fact of concentration of power has often led to despotism. अब इसमें ये बोला गया है कि जो राइट्स है एक इंडिविजुअल की, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं रिलेटेड टू द लिबर्टी, ये पूरा ट्रू है कि गवर्नमेंट एक अधिकार देती है लोगों को कि वो अपना व्यू जो है वो दे सकते हैं। जुडिशरी में भी ये बात लिखी गई है कि हाँ
हर किसी को एक अपना अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। इसलिए जो जुडिशरी वाले हैं उन्होंने इसको नेम दिया गया है वॉचडॉग ऑफ लिबर्टी, कि हाँ हर एक अपनी मर्जी कर सकता है। हाँ गलत काम में करोगे तो ऑब्वियसली कोई लॉ थोपा जाएगा, है ना, लॉ उस अकॉर्डिंग आपको सजा हो सकती है। बट हाँ इफ यू आर करेक्ट देन आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। Separation of power, that is executive, the legislature and judiciary being separate, is a greatly of liberty. Montesquieu said power should be a check of power. Rule of law or equality in the cycle of law is also important safeguard of liberty. This is this is bulk work against discrimination based on caste, class, color, creed, etc. A large measure of social justice or diffusion of social and economic privilege is the prerequisite for liberty. Its privileges become the prerogative of the select few, and then expensive liberty would be denied to the vast majority. कहते हैं कि अब हर किसी को अधिकार तो मिल ही गया है, बट उनकी पावर ही है, कोई उनकी पावर नहीं ले सकता, चाहे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके पास है पावर, इन्होंने बनाया है, इन्होंने लॉ बनाया, सब कुछ किया है, पब्लिक तक जो है वो सब कुछ पहुंचाया है। बट हाँ जो इनकी पावर अधिकार कोई नहीं खींच सकता। अगर कोई खींचने की कोशिश भी करता है तो दे हैव राइट्स कि वो उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। All these institutional safeguards are intended to preserve liberty in the citizens themselves, do not possess the power separate to preserve it. People should always be on their toes to ensure that their liberty is not encroached upon. Internal vigilance, it has been rightly said, the price of liberty. अब कहते हैं लिबर्टी जो है एक आजादी है सिटीजन की, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चाहे जो मर्जी हो जाए, हर कोई अपना व्यू देता है रिलेटेड टू दिस, बट मेनली इसमें एक ही बात कोई गई है कि हाँ एक इंडिविजुअल को आजादी दी गई है, उनको राइट्स दिए गए हैं, यही बात को मेनली बार बार रिपीट किया गया। Justice and its relevance of the citizens and states. The term justice is derived from the Latin word jus, which means a bond. Thus, the word justice means joining or fitting. Justice, says E. Barker, it is the reconciler and the synthesis of political values. अब कहते हैं जो जस्टिस है, जस्टिस का मतलब कि ये वर्ड आया है जस्ट से, जिसका मतलब होता है बॉन्ड, ये जोड़ता है एक स्टेट को, गवर्नमेंट को, ये हर एक चीज से कनेक्टेड है, रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। बाकी अगर हम जनरल डेफिनेशन इसकी बोले तो कि ये हर किसी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ रिलेट करता है, एक बॉन्ड बनाता है अच्छा वाला। एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस, व्हेन वी टर्न टू द broader question of justice, it has other constitutions, we find a number of views. Herein comes the concept of distributive justice. What is the proper way of distribution of income or social position in a given society? There are two major conceptions of distributive social justice. One involves the notion of merit and the other involves need and equality. Aspects of justice. Justice है क्या? ये जो है हिरिन, ये अपने एक व्यू देते हुए कहते हैं कि एक प्रॉपर पोजीशन एक सोसाइटी का, कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, ये सब कुछ एक जस्टिस के अंदर आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाता है। वो अपने फीलिंग्स, उनके व्यूज को समझते हैं और उन अगर कुछ वो चाहते हैं वगैरह, उनकी जरूरतें भी पूरी करते हैं कि एक सोसाइटी क्या कुछ चाहती है। Next is merit. The first
conception argues that each person's social positions and material wealth must be decided on the basis of merit. When people talk to the careers open to talents and equality of opportunity, they have merit in view. However, the question arises that how to measure merit or talent. The liberal says that the price that somebody can command in a free market is a reasonable editor of his or her value to others. The socialists criticize are of the opinion that market receipts are often affected by chance and social background, which next next which a person should define its needs and sufficient resources can be created under communi- communism to meet all the needs of an individual. However, others are the opinion that needs can be satisfied by two agencies, welfare state and market. Some needs can be satisfied through the welfare state and others being allocated through the market. कहते हैं हर एक की कम्युनिकेशन की एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि what they need. They can discuss with the government if they think कि कोई चीज गलत हो रही है. आगे है need and equality. The second conception views that need, what is the name of the topic? Equality of opportunity. Equality does not mean identity of rewards or identity of treatment, that is same reward or treatment for everybody regardless of efforts and circumstances. For example, there would be no quality if all the students were awarded 60 marks regardless of the quantity of answers. Ideally, those the right better should get high marks, and this is the compatibility of the equality. Likewise, in a society, some people have more income and some have less. However, this state of affairs does not violate quality, provides two conditions are met, absence of privilege and quality of opportunity. अब कहते हैं कि अगर मैं बोलूं कि किसी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, वो क्यों एक बंदा एक टीचर उसको अच्छे नंबर देगा, जा तो उसने वो बंदा क्यों अच्छा है, जा तो उसने हाई मार्क्स गेन किए हैं, और एक मतलब हाई मार्क्स उसने क्यों गेन किए क्योंकि जो उसका आंसर था, आंसर की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी और वो बाकी स्टूडेंट के कंपैरेटिव अलग उसने कुछ समथिंग लिखा था, इसलिए वो टीचर्स को ज्यादा मार्क्स देगा, इसलिए वो अच्छा स्कोर करेगा. तो वैसे ही जैसे कि एक क्लास में हर एक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वैसे ही इधर भी हर एक टाइप के पीपल सोसाइटी में हमें मिलते हैं. कहीं बहुत रिच होते हैं, कहीं मिडल होते हैं, कहीं पुअर होते हैं. तो बाकी टू कंडीशंस जो हैं इधर बनाई गई है. पहली है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज और सेकंड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. Absence of privilege stresses equality. The existence of privilege would conversely promote inequality. This means that no one will be the given fascination opportunity more than those given to others. Privileges create a situation of inequality and in the process harms inequality. अब कहते हैं एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज में ये होता था कि एब्सेंस ही होती थी, और वो एब्सेंस इस रिगार्डिंग होती थी, वो इक्वालिटी के रिगार्डिंग होती थी कि सबको इक्वल दर्जा जो है वो नहीं दिया जाता था, किसी को अलग किसी को अलग, तो सबको इक्वल जो दर्जा है वो नहीं दिया जाता था. आगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मींस एवरीबॉडी शुड हैव द सेम चांस टू एक्सेस public position and office.
An example of the working of the equality of opportunity in India is a civil service examination conducted by Union Public Services Commission UPSC. Any Indian graduate from any University of India can take the examination. कहते हैं अब इक्वालिटी वो होती है कि जैसे कि अब एक इंडिया में एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है जिसका नाम है मतलब कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है जो कि जिसे कहने मतलब यूपीएससी एक पेपर है, बहुत बड़ा पेपर है ये। सिविल सर्विसेज द्वारा ये पेपर जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है ऑल ओवर इंडिया। एंड ये बहुत ही टॉप का गवर्नमेंट पेपर है, ये कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कि कोई भी ये पेपर दे सकता है, कोई भी ग्रेजुएट वाला इस पेपर को दे सकता है। तो ये इक्वालिटी है कि हाँ हर कोई इसको पेपर को दे सकता है, हर कोई भी जो भी ग्रेजुएट है वो इस पेपर के लिए एलिजिबल है, तो वो दे सकता है। ये हुई इक्वालिटी। Allied to the concept of equality, everyone should get a chance to be initial starting line. Then the race of life could begin. Some would come first, some second, and others would fail. But these would not be violent of equality. Many people are convinced that equality of conditions can only be achieved when the historically disadvantaged group like the Dalits, the scheduled caste are compensated through reservation of jobs, or as it known in the United States of America, affirmative action. Equality is closely connected to equity, that is even harder treatment. Equality demands like cases to be treated alike. Relevantly, similar cases are of the treated in similar ways. अब इसमें ये बोला गया कि ये अब ये तो है नहीं कि जब भी एक लाइफ की रेस होती है कई लोग हैं वो फर्स्ट आ जाते हैं, कई जो लास्ट आ जाते हैं, और कई होते हैं वो कुछ भी नहीं आते, और कई ये भी होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं। कहते हैं अब हर एक बंदे का एक अलग ही क्राइटेरिया है, तो हम किसी को ऐसे कन्विंस नहीं कर सकते कि हाँ तेरा क्या क्राइटेरिया है, जब तू सही नहीं करा ये वो। हर किसी का अपना एक रूटीन है, अपना एक तरीका है जो कि उसको फॉलो करना है अपने अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज ओवरऑल रिजल्ट्स, कम्युनिटेरियन justice. There is the other kind of theory of justice that does not take either merit or need their account. It takes into account the overall results. John Rawls' theory belongs to this category. In his book, A Theory of Justice, he argues that inequality is the allocation of goods are permissible if and only if those inequalities work to be benefit on the least value of members of society. In other words, a society having income inequality is just if only if that inequality benefited the least advantaged member of that society. For example, a professor higher salary can be just if only if it directly or indirectly benefits, so to say, the bricklayer. अब कहते हैं कि हर एक की अलग एक थ्योरी है रिगार्डिंग द जस्टिस। कईयों की थ्योरी हाँ सही भी है, जैसे कि जॉन रोज थे उनकी थ्योरी थी अबाउट द इनइक्वालिटीज। देयर वाज लाइक कि हाँ इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, बहुत है, नो डाउट है, बट वी शुड कंट्रोल ओवर इट
On the other hand, scholars like Nozick argue in favor of traditional meaning of justice as respect for law and entitlements. Entitlement means established conventional rights. According to this story, individuals have natural rights, especially the right of property. These entitlements issue to the individuals because they are human beings. Nozick says nobody, not even the state, call override these entitlements. Putting simply, Nozick is arguing against extensive taxation imposed by the welfare state. He thinks that taxation interferes with the rights of the individual to dispose of the income as she or he thinks fit. Taxation is an instance or curtailment of liberty of the individual. Justice is a dynamic concept. It has been undergoing changing from the ancient times till today. So no final word can be said about justice. Justice is a concept which keeps evolving. अब नोजिक है, नोजिक को कहते हैं कि नहीं, जस्टिस ये है कि हाँ जिधर एक लॉ को हम माने, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको माने, उसके जो राइट्स बनाए गए हैं उसको हम सही तरीके से फॉलो करें, वो ये चीजें कहते हैं कि ऐसा कुछ होना, ऐसा होना चाहिए कि हम प्रॉपर्ली वो चीज को जो है वो फॉलो करें। बाकी जो जस्टिस है इसकी पर्टिकुलर कोई लाइन नहीं कह सकते, जो डिफाइन नहीं कह सकते, हर किसी का अपना व्यू है इसके रिगार्डिंग, और हर एक बंदे, और जो ये कॉन्सेप्ट है ये चेंज होता ही रहता है इसका, जस्टिस का, इसकी कोई मेन डेफिनेशन है ही नहीं अभी तक। जस्टिस एंड इट्स रिलेशनशिप्स विद लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब लिबर्टी और इक्वालिटी में मेन डिफरेंस इज दैट लिबर्टी इज अ फ्रीडम एंड इक्वालिटी इज equality, equalness. The 19th century scholars like Lord Acton and Alexis de Tocqueville consider liberty and equality as incompatible. They thought that too much of stress of equality would lead of the dilution of liberty. Many later scholars who agree with them, progressive taxation of the welfare state was considered violate of the liberty of the propertied people. However, it remained a fact that proceeds of tax went towards essentially the programs of ameliorate the plight of the poor and the employment, the needy and handicapped, and the aged. A largely egalitarian society was made possible by these programs. In times of conflict like this, prevailing notions of justice decides what should be the right mix of liberty and equality. This freedom and equality are two aspects of justice. The ultimate objective of both freedom and equality is justice. अब कहते हैं मेनली एक जस्टिस का क्या रिलेशनशिप है लिबर्टी और इक्वालिटी के साथ। कहते हैं कि जस्टिस तभी होगी अगर लिबर्टी और इक्वालिटी कोई सोसाइटी कोई चीज में फॉलो करती है। अगर कोई चीज जो है इक्वली है, कोई एक सोसाइटी इक्वली है, ठीक है, और उसको एक प्रॉपर फ्रीडम दी गई है, कोई रोक टाक या कोई ये नहीं है कि उस सोसाइटी पे किसी ने कब्जा वगैरह समथिंग लाइक दैट किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको बिल्कुल लिबर्टी है और उसको हर एक इक्वालिटी दी है कि हाँ तो ये सब राइट्स है जो एक राइट्स होने चाहिए सिटीजन्स के, सब है राइट्स गिवन है, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। फिर हम कह सकते हैं हाँ कि वो एक जस्टिस है, कोई मान लो चाहे वो कह लो एक जस्टिस सोसाइटी है, जो भी है, हाँ वो जस्टिस है। तो ये सब ये टॉपिक में बताया गया जस्टिस रिलेशनशिप विद लिबर्टी एंड इक्वालिटी में। नेक्स्ट